Hello student, we are discussing here the chapter number 10 of the class 6. The name of this chapters motion and measurement of the distance. So this is the name of the chapter. In this chapter we will be discuss about what are the meaning of the motions and what are different type of the motions. And the second one we will be discuss how we will be measure the distance. Okay, so I think we can start here. So firstly you have to remember the motion. Motion is a word which relate with the movement. Movement means if any object is moved from one place to another place, then we will be call it is in the motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, that will be known the motion. You will be see when an object is said to be in motion when it will be change its position with respect that times. Suppose if I am walking here, okay, if I am walking on the road, so sometimes at the one times I'm here, after sometimes I will be reach at the another place. Okay, so definitely what I am doing is I am changing my place with respect that times I am in the moving, I am in the motion. So that's why I will call I am in the motion. Suppose another example, a car is moving at the one place at the one time, this is here, but another times this will be reach here after 5 seconds, after 10 seconds. So definitely this car is in the motion. If you will be see the tree will not be moved, house will not be moved. So those object which does not move, that will be known the stationary object, or we can say they are in the rest. I hope you get the meaning. This is the terms which we use in the opposite of the motion. So there are so many example like the swings जिसको हम झूला बोलते हैं, bullock cart, windmills, pendulum of the clock. So the pendulum of the clock, so many example which we observe in the motion. Now students, we will be discuss the different type of the motion. Firstly, we will be classify them into the four type: rectilinear motions, circular, rotational, and the periodic. So now we will be discuss it one by one. Rectilinear motion. So rectilinear means you have to remember that rectilinear means straight line. If any object is moving in the straight path, that will be known the straight line motions or rectilinear motions. Okay, so another name of the rectilinear motion, straight line motions. Any object is moved in the straight path. Suppose this bicycle, if it is moving in the straight road, then we will be say this car, this bicycle is in the straight line motion. Suppose if I am walking on a single road, this is the straight road and I am walking on this place. ओके अभी मैं यहाँ पर हूँ, कुछ टाइम बाद मैं यहाँ पर हूँगा, तो मेरा मूवमेंट है वो स्ट्रेट रोड के अंदर है. So that's why we will be call, or I will call, I am in the rectilinear motion. Now the second one, the circular motion. So those motion or those object which will be take the motion in a circular path. अगर motion circular path में है, that it will be known the circular motion. Another, for example, here earth, definitely you know that the moon is revolving around the earth. So moon will be continuously revolve around the sun in the circular path. So we can say moon follow the circular path. So that's why moon has a circular motion. मून सर्कुलर पाथ में घूमेगा, इसीलिए हम बोलेंगे मून के पास सर्कुलर मोशंस है. ठीक है, आई थिंक यू गेट द मीनिंग. इसी तरह से सारे जो प्लेनेट होते हैं वो सन के अराउंड इसी तरह से मूव करते हैं. सपोज दिस इज द सन एंड द फर्स्ट प्लेनेट, सेकंड प्लेनेट, थर्ड प्लेनेट, डेफिनेटली दे मूव अराउंड द सन इन ए सर्कुलर पाथ. सो हम बोल सकते हैं सभी प्लेनेट सर्कुलर मोशंस में मूव करते हैं. अगर आपने एक थ्रेड लिया, अब उसको मूव कराओगे, थ्रेड स्टोन लेकर थ्रेड से बांध करके उसको अगर आप मूव कराओगे तो वो क्या करेगा, थ्रेड भी हमारा सर्कुलर मोशंस में ही मूव करेगा. There are so many examples like the hands of the clocks, like the blade of the fans, like the yes merry-go-rounds. Okay, जो ये हमारा झूला है, that will also move in the circular paths. I hope you get the meaning of it. Now the student, third type of the motions, periodic motions. You have to remember periodic means when a motion is repeat again and again after a certain time. अगर कोई motions बार बार repeat हो रहा है, that will be known periodic motion. And there are so many example. If I give you the example like the pendulum, here this is the pendulum. Suppose if I take a ball and I will tie it with a thread, मैंने thread से tied कर दिया, अब मैंने उसको थोड़ा सा इधर ले आके छोड़ दिया, then what will be happen, this ball will be move firstly in this direction, then it will be move in this direction, then it will be move in this direction. So it will be continuously move in the backward, in the forward directions. So this kind of the motion is
periodic motion because it will be occur continuously. Okay, so ये हमारा again and again motions होता रहेगा. There are so many example I am telling you against. Yes, for the rotation of the earth around its axis around the sun, so it is also the periodic motion. You know that. Suppose this is the sun and earth is rotating around the sun. This is the earth and this is the sun. So definitely if earth is revolving around the sun, so what is the meaning of it? ये ऐसा नहीं है कि एक चक्कर लगाने के बाद स्टॉप हो जाएगी. डेफिनेटली it will be continuously move. Firstly it will be take the one round, then second round, then third round, so it will be continuously. So this is a repeated motions, so it will also known the periodic motion. यू विल से सर ये तो हमारा सर्कुलर मोशन है. ओके, ये सर्कुलर मोशन है, बट सर्कुलर के साथ साथ पीरियोडिक भी मोशन है. एक मोशन एक तरह से ज्यादा टाइप का भी हो सकता है. यू हैव टू रिमेंबर ए सिंगल टाइप ऑफ द मोशंस कैन हैव ए मोर देन वन टाइप ऑफ द मोशंस. उसके पास दो या एक या दो तरह के मोशंस भी उसमें पॉसिबल होते हैं. आई होप यू गेट द मीनिंग. नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ टाइप ऑफ द मोशन यू विल बी सी लाइक द स्ट्रिंग्स. कोई भी अगर हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है एंड इट इज वर्क ऑन द स्ट्रिंग्स, सो डेफिनेटली इफ यू विल बी स्ट्रेच द स्ट्रिंग देन व्हाट विल बी हैपन. जैसे ये रबर बैंड है और हमने इसको स्ट्रेच कर दिया, पहले हम इसको ऊपर करेंगे देन इट विल बी स्टार्ट टू वाइब्रेट. ये ऊपर जाएगी देन नीचे जाएगी, फिर ये ऊपर वाइब्रेट करेगी फिर नीचे वाइब्रेट करेगी. यू विल बी सी. सो इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ द वाइब्रेटिंग मीन्स अप एंड डाउन रिपीटेड मोशन. सो इट इज ऑल्सो ए पीरियोडिक मोशंस. आई होप इट्स क्लियर बिकॉज ये रिपीट हो रहा है. जो तबला दे रखा है या ढोलक दे रखी है जो इसकी मेम्ब्रेन से स्किन से when we will be beat it then it will also vibrate. so vibration is also a repeated motions. और हम बोल सकते हैं कि vibrations भी हमारा periodic motions है, क्योंकि vibrations क्या होता है, ऊपर जाता है motions और नीचे होता है. किसी भी ऑब्जेक्ट को वो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा. दिस काइंड ऑफ द मोशन इज वाइब्रेशन मोशन एंड दिस इज ऑल्सो द सेम. वाइब्रेशंस एंड पीरियोडिक दोनों का मीनिंग ही सेम होता है. उसको हम वाइब्रेटरी मोशंस भी बोल सकते हैं, पीरियोडिक मोशंस भी बोल सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो कॉल देम द ऑक्सीलेटरी मोशंस. ओके, ये अलग अलग नाम है लेकिन इनका मीनिंग सेम है. नाउ स्टूडेंट्स, fourth type of the motion, rotational motion. Rotationals, you have to remember, if any object will be moved around its axis, fixed axis. जैसे एग्जांपल लो टॉप का, ये आपने देखा टॉप मूव कर रहा है जिसको हम हिंदी में लट्टू बोल देते हैं, और लट्टू ये बिल्कुल अपनी ही एक्सिस पे मूव कर रहा है. ओके, सो ये रोटेट करे जा रहा है. सो स्पिनिंग टॉप, सो दिस इज ए काइंड ऑफ द रोटेशनल मोशन. द रीजन बिकॉज इट इज मूविंग अराउंड इट्स एक्सिस. ये एक्सिस है, इसी के रोटेशन इसी के अराउंड ये मूव कर रहा है. So spinning of the earth, that is another example of the rotational motion. You know that earth भी हमारी अपने ही spin के around move करती है. ये सन के रोटेशन में भी करती है, सन के अराउंड भी मूव करेगी, बट अपनी एक्सिस के अराउंड भी मूव करती है. सो वी कैन से अर्थ हैज ए रोटेशनल मोशन एज वेल एज द सर्कुलर मोशन. ओके, क्योंकि सर्कुलर मोशंस कब होगा, जब वो सन के अराउंड मूव करेगी, और रोटेशनल मोशंस कब होगा, जब वो अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगी. आई होप यू गेट द मीनिंग ऑफ इट. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल बी डिस्कस object having more than one type of the motions. There are so many example which has more than one type of the motion. So, first case, the case of the earth. If you talk about the earth, so definitely you know that earth is moving around the sun. Suppose this is the sun and this is the earth, and earth will be moving around the sun. So definitely you will be say, sir, earth has a circular motion. Yes, you are right. Earth has a circular motion because it will be move around the sun. And you also know that अर्थ इज मूविंग अराउंड इट्स एक्सिस. अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड भी मूव करती है. सो डेफिनेटली अर्थ हैज ऑल्सो रोटेशनल मोशन because it also move around its axis. And the another you will be say, yes, earth is continuously move around the sun. ये sun के continuously move करती है. After one rotations then it will be start the its second rotations, फिर third rotations. ये अलग अलग round, यानी कि ये कई सारे numbers increase होते रहते हैं. So definitely it will not be stops. So it is a again and again motions. It is a same type of the motion. So ये repeated motions है. So we can say it is also follow the repeated motions or the periodic motions. So I hope you get the meaning. Earth has a three type of the motions: rotational motions, periodic motions, and the circular motions. Similar another example, if you will be see the merry-go-round.
Yes, जो हमने झूला देखा था. So it also move in the circular motions. So it has a also circular motions and the rotational motions. And another example, the case of the bicycle. Definitely suppose if a bicycle is moving in the straight road. ये थोड़ा सा मैंने bicycle का structure stroke कर दिया. And if it is moving in the straight road, if it is moving in the straight road, then you will be say yes, it will be follow the rectilinear motions. Yes, it is correct. But it has also a, yes, another type of the motion. You will be say the wheel of the cycle will be moved in the, yes, circular path, in the rotational path. So they will be move around its axis. So they will also carry the rotational motion, because the wheel of the bicycle, they have a rotational motions and cycle have a rectilinear motion. Similar in case of the ball, if you will be see a ball, if ball is moving, जैसे ये बॉल है और ये बॉल मूव कर रही है, सो इफ द बॉल इज मूविंग, डेफिनेटली इट विल बी फॉलो द रेक्टिलिनियर मोशंस. ओके, और वो हमारा रोटेशनल मोशंस भी फॉलो करेगी अगर वो स्पिन कर रही है, घूम भी रही है और वो सीधे भी जा रही है. In the case of the saving machines, it also follow the some different type of the motions, like the rotational and the periodic motion, because it continuously rotate its wheels. जो sewing machines होती है उसके wheels भी continuously rotate करते हैं. So I hope you get the clear, one type of the motion या one type of the object can contains more than two, more than one type of the motions. एक object में दो या तीन तरह के भी motions present होते हैं. Now in the next class we will be discuss the story of the transport.